Hello viewers and welcome back to Campus Wala. So guys, when it comes to doing MBA, बहुत सारे उड़ीसा के स्टूडेंट्स की पहली प्रेफरेंस होती है टू डू MBA फ्रॉम उड़ीसा इटसेल्फ। और अगर हम बात करें अबाउट बी स्कूल्स इन उड़ीसा, तो बहुत कम बी स्कूल्स ऐसे हैं विच आर इन उड़ीसा, इन भुवनेश्वर और इन संबलपुर। So guys, let me name some of the MBA colleges in Odisha based on their NIRF ranking of 2024. So guys, सबसे पहले नंबर पे आता है XIMB which is Xavier's Institute of Management Bhubaneswar on 43rd rank. उसके बाद आता है IIM संबलपुर on 50th rank. उसके बाद आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑन 61st रैंक एंड देन कम शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी ऑन 62nd रैंक और फिर आता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑन 67th रैंक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अबाउट शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी विच इज इन भुवनेश्वर। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, प्लीज स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड, प्लेसमेंट, द टॉप रिक्रूटर्स और यहाँ तक की लोकेशन तक की सारी इंफॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, also known as SOA University Bhubaneswar, is a private deemed to be university which was established in the year 2007. इसके accreditations हैं NAAC with A++ grade, NBA, NABH as well as ICRA and it is approved by UGC. इसके जो international accreditations हैं वो हैं ABET USA. It is ranked internationally by QS and World University Ranking in 2025. It is also ranked at 67th rank by NIRF ranking in 2024. Apart from these ranks, it also holds several other ranks as well. This university offers MBA program in various specialization. The first one is MBA General. Next is MBA in Hospitality Management. Then it is MBA in Hospital Administration. And the last one is MBA in Data Science and Artificial Intelligence. Depending upon the specialization you choose, the fee structure is different. For MBA General, the total fees is 7.5 lakhs. For MBA in Hospitality Management, the total fees is 1.9 lakhs. For MBA in Hospital Administration, the fees is 3.5 lakhs. And for MBA in Data Science and Artificial Intelligence, the total fees is 7.9 lakhs. To take an admission, the candidate must hold a bachelor's degree with minimum 50% in the exam scores which are accepted here are CAT, ZAT, MAT and SAAT which is the university's own entrance exam. अब हम आगे जानते हैं इनके placements के बारे में। तो as per the data of 2024, the highest package is 46 LPA and the average package is 5 LPA. इनके टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं अडानी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट जैसी कुछ बड़ी कंपनीज। अब हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस यूनिवर्सिटी इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 127 acres. It has laboratories, libraries, computer labs as well as hostels for the students. अब हम जानते हैं लोकेशन के बारे में। सो इट इज अराउंड 16.9 kilometers away from भुवनेश्वर जंक्शन and it is around 6.1 kilometers away from Biju Patnaik International Airport. So guys, this was all about Shiksha or Anusandhan University of Bhubaneswar. And if you want to know how you can take admission in this university or you have any such queries whether there is a management seat or special seat or not, please give us a call on our helpline number so our academic counselors can guide you in the best possible way they can. Thank you so much for watching and stay tuned for more such informative content.